Good afternoon, student. Welcome back to another lecture of the chapter pollution. Let's start with water pollution. When we last year when we are talking about pollution, we have started about different kind of pollution, and we have discussed in detail about air pollution. So today we are going to start with water pollution, and there is light pollution and also soil pollution. Let's watch one by one, and first we will start with a video about water pollution. So let's watch the video first, then we will go to our theoretical lecture. Okay. Let's watch the video. Which component on the planet Earth helps sustain life? Water, that's right. Water is the most precious resource nature has provided us with. With that in mind, I want you to analyze the picture on your screen. Look at this picture carefully. Is the water in this village clean? Is it safe for drinking? I'm sure your answer is no. But why? Impure, is that the word that came to your mind? Yes, this river water is indeed impure. But what makes this water unfit for consumption? Can we enlist the reasons? Firstly, women are washing soiled clothes and animals in this water. Yes, the industries and the houses have let their sewage into this river water via pipes. Well, what happens when these things are done? The pathogens and harmful chemicals are let into the water, which make it unfit for human use. In other words, we say this water is polluted. The harmful materials that pollute water are called pollutants. Just as pollutants are released in the air, water too can be polluted. However, the pressing concern here is the fact that we have very little fresh water. If we contaminate this water at the present pace, soon we will have very little water for our survival. Do you know that the effects of water shortage have already started in far-off villages? Some people walk miles to fetch just one bucket of fresh drinking water. What are the major factors causing water pollution? Industries, human practices, agricultural activities, and many other factors cause water pollution. One thing we must clearly understand is that pollutants that pollute water create a chain of pollution. A chain? What do we mean by that? For example, pollutants like pesticides and insecticides in the water can harm the soil. Polluted water seeping through the soil contaminates the soil as well. How does this water contaminate the soil? The biotic component of the soil, like microorganisms, can be harmed by these pollutants. It can lead to growth of unwanted bacteria which affect the composition of the soil. Chemicals that are emptied into water bodies can harm the aquatic life. Industries have been asked to treat the hazardous water before letting it into the water bodies. This process is usually overlooked. If contaminated water seeps into the ground, it can pollute the underground natural water reserves as well. As we know, water pollution can be a serious threat to human existence. If humans and animals consume this harmful water, it can lead to various infections and sometimes even death. The main question that arises now is, do we have safe drinking water? How do we know that the water we drink is safe? Let us study about that in our next video. So that's it about the video. So we have learned about some kind of what kind of water, use of water, or maybe what kind of way we can conserve water, or maybe sometime how we exactly polluting the water. So this is all about water and water related things, but now let's study about the theoretical or the basic knowledge of what exactly happening and how
this is exactly happening. Or when you are looking around your like surroundings, you can think like, okay, this is also kind of water pollution. We have already learned about it. And also there is some kind of preserve like when you want to conserve water, there is some kind of measure you can take. And this thing you will when see the, okay, so this is like rainwater harvesting or something. This is what we talked about, or maybe ma'am talked about. Let's start with our basic knowledge of theory. So this is the introduction we have already seen. So let's learn about what is water pollution. Water pollution happens when harmful substances like trash or chemicals get into rivers, lake and ocean. मतलब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर कोई भी वाटर बॉडी लाइक रिवर लेक पॉन्ड वॉट एवर यू कैन सी विच इज लाइक वी कॉल इट वाटर बॉडी लाइक मे बी ओशन और समथिंग, कोई भी हार्मफुल चीज अगर वही चीज को वही प्योर चीज में अंदर अगर इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उसका जो एक्चुअल नेचर है वो बदल जाता है। और वो जो बदलना वही चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर चीज गेट पॉल्यूटेड। लाइक अगर वाटर में कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स होने के बाद वाटर का एक्चुअल नेचर चेंज होके उसका नेचर अगर थोड़ा सा हार्मफुल हो जाए, लाइक सोचो कि कोई वाटर पोल्यूटेड हो चुका है एंड यू आर यूजिंग इट एंड कंज्यूमिंग इट, लाइक आप खा पी रहे हो कोई पानी को और वो अगर पोल्यूटेड है तो उससे डिजीज होने का लाइक पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने प्यूरिफाई नहीं किया। तो दिस थिंग्स वर्क लाइक दैट। अगर आप कोई भी चीज कोई भी वाटर कोई भी नेचुरल सब्सटेंसेस में कोई हार्मफुल चीजें अगर इनकॉर्पोरेट हो जाए जो उसका एक्चुअल नेचर ओरिजिनल नेचर को बदल दे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज पॉल्यूटेड हो चुका है। Just like here, some kind of a pollutant is polluting the water, so we can call it as water pollution. It can make the water unsafe for animal and plant and sometimes even for the people who use the water. जैसे मैंने बता रही थी आपको कि कोई भी वाटर आप पीने जा रहे हो और वो ऑलरेडी पोल्यूटेड है तो वो आपकी बॉडी में डिजीज का इनकॉर्पोरेट कर सकता है। लाइक आपका कोई डिजीज नहीं है, आप एकदम हेल्दी एकदम ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। अभी के लिए तो ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप वो गंदा वाला पानी पी लिया तो वो आपकी इंडाइजेशन हो सकता है, पेट खराब हो सकता है आपका, ऐसे बहुत सारे कुछ डिजीज उससे आपके शरीर में आ सकता है। जस्ट लाइक दैट थिंक अबाउट कोई पोल्यूटेड है, कोई पोल्यूटेड वाटर है और आपके पास एक प्लांट है, उस पर डाल दिया आपने तो वो उसके अंदर जो गंदा चीजें है उससे वो प्लांट मर जाएगा। सेम गोज टू सोचो कोई भी, जैसे कि हम लोग नदी पे देखते हैं ना डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल प्लैनेट और डिस्कवरी दिस काइंड ऑफ चैनल्स में, नेशनल जियोग्राफी चैनल्स में, कि वो जो एनिमल्स होता है वो पानी पीने आता है रिवर में, ठीक है। अगर सोचो वो रिवर का पानी अगर पॉल्यूटेड हो जाए तो वो जो एनिमल्स आ रहा है पानी पीने के लिए वो तो उसको तो पता नहीं है, उसके पास वाटर प्यूरिफायर भी नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने वहां से पानी तो पी लिया बट उसके बाद उसकी बॉडी में मतलब गंदा और गलत इफेक्ट हो सकता है वो गंदा पानी पीने के जरिए से, है ना। तो दिस इज काइंड ऑफ वाटर पॉल्यूशन we are talking about, or maybe the effects could be seen in animal and plant. So here is another video about water and water pollution. Let's watch it and carefully watch it and then we will discuss about it in detail. Let's watch it. You must have heard the saying, water is life. Do you know why this is so? What percent of the earth does water occupy? Water occupies close to 71% of the earth. It is present not only on the surface, but also under the ground. Another amazing fact about water is that it exists in all the three forms.
Can you tell me where is water found in the liquid state? Water in the seas, oceans, rivers, and even in our water taps is all in the liquid state. Wait, if about 71% of the earth is water, why are people talking about water conservation? Why is there a shortage of water all around the world? Do you know why? About 97% of the water on the earth is salt water. It's saline in nature. The water in the seas and oceans, that is. It has a huge amount of salt dissolved in it. And the remaining 3% is fresh water. Wait, it doesn't end here. About 70% of the fresh water is frozen in the ice caps and glaciers. And most of the remaining 30% is present as soil moisture or lies deep underground and is not accessible for human use. Only about 1% of this fresh water is accessible for direct human uses. This is the water found in lakes, rivers, reservoirs, and those underground sources that are shallow enough to be tapped at an affordable cost. Even this 1% of fresh water is not available everywhere. It is unevenly distributed, and therefore there are some places which suffer from water shortage. Now, do you understand why all world leaders are advocating water conservation? Good. So, this was about water in the liquid state. Where is water found in the solid state on the earth? Yes, as we discussed, the frozen water in the ice caps and glaciers are examples of water in the solid state. Does water exist in the gaseous state? Yes, it does. The water vapor which rises to form clouds is all in the gaseous state. This too is a form of water. Water is a very important resource because it is the basic need of living organisms. What percent of water is present in the human body? Our body is made up of around 60% water. All metabolic processes of the body and even the cells require water. Without water, all organisms will suffer. Only abundance of water will ensure survival and diversity of living organisms. Now that you know how important water is and also how scarce it is, what happens when we dirty this water? Yes, that's water pollution, and it is a major problem in today's world. We are contaminating even the very little water we have left. And how is the water getting contaminated? Let's see if we too are contributing to this pollution of water. Water pollution can happen in two major ways: addition and removal. When we add undesirable substances into the water, it proves harmful to the living organisms living inside it as well as to us who drink this water. How do we end up adding these substances? When we spray excess pesticides and fertilizers in our farms, they dissolve in the water and find their way into the fresh water. We also let our sewage into lakes and the seas. In rural villages, people wash their cattle in the public pond. All these cause germs and chemicals to be added into the water. Sometimes industries use water as cooling agents, and this heated water is then let back into the water body. What do you think will be its impact? The sudden change of temperature will kill the aquatic animals that are not used to sudden temperature changes. What about removal? Sometimes we use oxygen from the water and also some nutrients and then send back the water devoid of major nutrients back into the water body. This makes the water polluted as well and unfit for the marine animals. Just imagine what would happen if we keep contaminating the water at this rate. It will lead to an acute shortage of fresh water. We will never realize when we have contaminated water to such an extent that life would be impossible. तो हम लोग ने देख लिया कि वाटर एग्जैक्टली हम लोग को कैसे हेल्प करता है और किस तरह से हम लोग वाटर का पॉल्यूशन में पार्शियली और मे बी डायरेक्टली रिलेटेड है ना? तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इट अ लिटिल मोर, दैट इज okay, there is another video, but before that let's okay, there is like water pollution का more or less हम लोग एंड पे है.
तो थिंग इज यहाँ पे हम लोग वीडियो में क्या देखा था, वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि ये जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है ये कुछ जगह पे जैसे कि गांव में होता है, क्या गांव में जो पॉन्ड है वहां पे लोग वही पॉन्ड में आके अपना कपड़ा धो देते हैं और साथ में अपना जो कैटल्स है समथिंग है ना वो भी वहां पे वो लोग नहाते हैं वहां पे। तो होता है क्या, और वही पानी अगर पी भी लेते हैं कहीं पे जगह पे तो होता है क्या, ये पॉल्यूटेड वाटर उसकी बॉडी में भी जा रहा है और साथ में जो एक्चुअल प्योर वाटर है उसको उसने पॉल्यूटेड भी कर रहा है। और साथ में अगर हम लोग देखें कि ये जो हम लोग का टाउन और जो सिटीज है वहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि सोचो साइड में कोई रिवर है और मे बी लेक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जो रिवर और लेक से पानी लेके अपना अपना जो फैक्ट्री है वहां पे सोचो कि कोई मेटल का फैक्ट्री है और मे बी समथिंग जो वाटर का जरूरत है जहां पे वो चीज को प्यूरिफाई करने के लिए और मे बी धोने के लिए कोई भी पर्पस में कोई भी फैक्ट्रीज में पानी का यूजुअली जरूरत होता है कोई ना कोई कोई ना कोई चीज करने में। तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो फैक्ट्रीज है ये लोग पानी को ले रहा है और साथ में पानी को यूज करने के बाद वही जो पॉल्यूटेड पानी है उसको फिर से वही नदी में बहा रहा है। तो हो क्या रहा है, ये अच्छा पानी तो जा रहा है प्योर वाटर, बट जो आ रहा है वो गंदा पानी है लाइक पॉल्यूटेड वाटर एंड वो पानी उस नदी से ही बह रहा है, कोई प्यूरिफिकेशन बीच में नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है, जो एक्वाटिक लाइफ है प्लांट एनिमल बोथ ऑफ देम लाइक उसका लाइफ अफेक्टेड हो रहा है क्योंकि वो तो यूज टू है अच्छा वाला पानी में उसका लाइफ बिताने में ना, तो अभी क्या गंदा वाला पानी आ रहा है तो वो कई कई टाइम पे होता है क्या कि ये जो एनिमल एंड प्लांट्स है दे जस्ट डाई, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग हियर। So there we are in our last video about water pollution, that is potable water and ways to prevent water pollution. हम लोग किस किस मेजर ले सकते हैं so that we can prevent the water pollution, ठीक है। So let's watch the last video, the prevention of water pollution. Let's watch it and have some knowledge about how to prevent water pollution. Have you ever looked at the water you drink? Does it appear pure or is it truly pure? Does it have unseen impurities? Well, our naked eyes cannot see the microscopic organisms like bacteria that pollute the water. So, how can we purify water before drinking? Any ideas? Boiling? Yes, that is the most common method of water purification. We have a particular name for water which is fit for drinking. Do you know what such water is called? It is known as potable water. Water which is fresh and safe for drinking is known as potable water. Just as industries treat their sewage water before letting it into the streams, in a similar way, water is treated before consumption. Municipal authorities and other city authorities treat the water before selling it to the residents. How do you think this treatment is carried out? Three major methods of purifying water are filtration, boiling, and chlorination. Filtration of polluted water can be done at household as well as at city level. The most basic filtration is the use of alum in households. Small candle gun filters are also used in houses. Boiling is the most common way of purifying water. Boiling kills most of the disease-causing microbes present in it. And it's the most effective way to purify water at a household level. What about the huge water tanks that store water for the city? How can this water be kept pure? Chlorination is the way out. Adding chlorine to water can kill the harmful pathogens, bacteria, and viruses in drinking water. Where else have you heard of chlorine being added to water? Pools, of course. Now you know why. What do you think can help prevent water pollution? We must prevent water pollution at individual as well as communal level. What can be done at the community level? We can create awareness programs, host exhibitions on the ways to save water, and implement strict laws. And what type of laws?
Well, these are meant for treatment of sewage water that is let into the water bodies. At an individual level, we must pledge to use water judiciously. We can also follow the 3 R's: reduce water consumption, reuse water from our kitchen, and recycle water whenever possible. Every small step counts towards saving this precious resource called water. We have to use this limited natural resource wisely. So this is about the water pollution. We have already completed the water pollution. Next thing we will go to the soil pollution. So let's learn about soil pollution at first. What is soil pollution? Like, tell me, what can you think of it when we talk about, like, when someone says like there is soil pollution or maybe there is land pollution. Both are kind of same or maybe exactly same. How this is? Think about it. If you are looking at this thing, you can see that there is soil surface, and here you can also see that there is kind of dumping thing. People dump things here. ठीक है, जो हम लोगों का कचरा होता है घर का, जो लाइक जो चीजें हम लोग मतलब यूज नहीं करते हैं, कोई वेस्ट मटेरियल्स है, समथिंग लाइक दैट, हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी अगर डंप कर दे तो वो अगर सॉइल सरफेस है तो उस जगह का जो फर्टिलिटी है, उस जगह का जो एग्रीकल्चरल वैल्यू था वो कम हो जा रहा है, क्योंकि वहां पे अगर हटा भी लोगे तो भी उसका इफेक्ट वहां पे रह जाएगा। एंड फॉर दैट व्हाट हैपन, फॉर दैट उस जगह पे अगर आप फिर से कोई खेती बाड़ी कुछ करने जाओ तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका जो फर्टिलिटी था वो ऑलरेडी कम हो चुका है। किसके जरिए से? क्योंकि सॉइल ऑलरेडी पोल्यूटेड हो चुका है बाय दैट वेस्ट मटेरियल। ठीक है, सो if we talk about the definition, what we can see that when the land is filled with garbage, it's called land pollution. These can include the things like plastic, paper or other waste that doesn't break down easily. कुछ चीजें होता है जो अगर आप कहीं पे फेंक दोगे तो सालों मतलब 100 साल, हजारों साल हो जाए तो भी वो इंटैक्ट रह जाएगा, जैसे कि प्लास्टिक। दिस इज अ हेवी थिंग, लाइक जो हम लोगों का आज का पॉल्यूशन का जो इश्यू है उसके अंदर अगर हम लोग सोचे तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल और मे बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो जिसका पोल्यूशन हम लोग को सबसे पहले कम करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक इज समथिंग जो एग्जैक्टली इंटैक्ट वे में सालों साल रह सकता है। उसका कोई मतलब हम लोग बोलते हैं ना, इसका कोई डिक्रीज नहीं होता है, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इसीलिए प्लास्टिक यूज कम करने के लिए बोला जाता है आजकल। तो आप लोग भी जब यूज कर रहे हो कोई चीज, प्लास्टिक कम यूज करना, और इफ यू कैन डोंट यूज इट, जस्ट गेट बैक टू आवर नेचुरल थिंग लाइक जूट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्लास्टिक होता है, कुछ पेपर्स होता है, एंड साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा होता है, जैसे कि सोचो कोई मेटल का कैन अगर आप फेंक दोगे तो वो मेटल तो ऐसे लाइक 1 दिन 2 दिन में बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है ना, हो नहीं जाएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मतलब आप रख दोगे तो आप 10 साल बाद में भी शायद वो कैन आपको वो इसी जगह पे अगर किसी ने हटाया नहीं होगा तो इंटैक्ट मिल जाएगा, प्लास्टिक भी इंटैक्ट मिल जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है वो क्या कर सकते हैं, वो उस जगह का लैंड को, लैंड सरफेस और सॉइल सरफेस को पॉल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है लैंड पोल्यूशन कैन हार्म एनिमल एंड प्लांट लिविंग ऑन दैट ग्राउंड। सोचो उस जगह पे कोई एनिमल और प्लांट है, प्लांट के ऊपर गार्बेज फेंक दिया तो क्या हो गया, उस जगह का जो प्लांट है वो मर गया। सेकंड सोचो उस जगह पे कोई अर्थवर्म है, क्योंकि वो उस जगह पे रह सकते हैं सॉइल में, उस अर्थवर्म के ऊपर अगर सोचो वो अर्थवर्म क्या करता है, फर्टिलिटी में हेल्प करता है सॉइल का, बट उस अर्थवर्म के आप ऊपर क्या कर रहे हो, गार्बेज फेंक रहे हो तो वो भी मर जाएगा। मतलब दिस इज काइंड ऑफ इसका जो लाइफ है ये खत्म कर रहा है। और मे बी उस जगह का जो यूजुअल जो पॉपुलेशन था उस जगह की, उसको साइड में हटना पड़ रहा है, क्योंकि उस जगह ऑलरेडी पोल्यूटेड हो चुका है। तो उस जगह पे जिन लोगों का, जिन एनिमल प्लांट का हैबिटेट था वो बदल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल रिसोर्स एंड सॉइल पोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे एक वीडियो है।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा फोटो इमेज है, साथ में थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग बता चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या पोल्यूशन, मतलब क्या क्या चीज पोल्यूट कर रहा है। देखो, फर्स्ट इज हैजर्डस वेस्ट। When hazardous waste like batteries, paint or chemicals are thrown into landfills, toxic materials can leak into the soil. कोई भी हैजर्डस वेस्ट जैसे कि बैटरी, सोचो बैटरी के अंदर केमिकल्स रहता है, साथ में यहाँ पे और कोई केमिकल्स, पेंट का कैन जो केमिकल मतलब साथ में केमिकल मिला हुआ होता है, वो अगर आप फेंक दोगे और वो इंटैक्ट लाइक उसके अंदर अगर प्रोडक्ट है तो क्या होता है, वो लीकेज के जरिए से भी सॉइल को पॉल्यूट कर सकता है। सेकेंड क्या है, दिस मटेरियल डू नॉट ब्रेक डाउन और रिमेन इन द सॉइल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, दिस मेक द सॉइल अनसेफ फॉर ग्रोइंग फूड एंड इवन बीइंग अराउंड। क्या बता रहा है यहाँ पे, प्रोड्यूसर सॉइल, हम लोग का जो प्रोड्यूसर है लाइक ग्रीन प्लांट्स, उसकी लाइफ भी प्रॉब्लमेटिक कर सकता है और साथ ही साथ एनिमल्स की लाइफ भी, उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक गार्बेज, एक जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है वहां की फोटो है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्लास्टिक एंड मेटल, यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लास्टिक एंड मेटल के बारे में बता चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे प्लास्टिक है और कई कई जगह पे आपको मेटल भी मिल जाएगा, जैसे कि लास्ट वाला यहाँ पे देखो कुछ मेटेलिक स्ट्रिप्स था जो मेटल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल्स। तो ये क्या कर रहा है, प्लास्टिक एंड मेटल्स टॉस्ड इन द लैंडफिल आल्सो कॉजेस सॉइल कंटामिनेशन। कैसे, दे डू नॉट डिकम्पोज फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, एज दे स्लोली ब्रेक डाउन दे रिलीज टॉक्सिन केमिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सालों साल इंटेक्ट रह जाता है, और अगर डिग्रेड करना शुरू भी करे तो उसका जो एक्चुअल सब्सटेंस है वो क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते करते डिग्रेड करता है। मतलब जब इंटेक्ट रह जाए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और जब डिग्रेड हो रहा है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, दिस मेक देयर वे इनटू सॉइल एंड ग्राउंड वाटर एंड स्प्रेडिंग द कंटामिनेशन। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक केमिकल रिलीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सॉइल के अंदर अंदर चले जा रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है एंड स्प्रेडिंग द कंटामिनेशन। ग्राउंड वाटर हम लोग पीने के लिए यूज कर लेते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये सॉइल के अंदर जाके ग्राउंड वाटर में मिक्स होने के बाद ये हम लोगों का जो पीने का पानी है उसको पोल्यूटेड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन। अब हम लोगों को वीडियो देखना है। फर्स्ट वीडियो क्या था हम लोगों के लिए, फर्स्ट वीडियो वाज सॉइल एंड सॉइल पोल्यूशन एंड नेक्स्ट द सॉइल पोल्यूशन। तो यहाँ पे बैक टू बैक दो वीडियो हम लोग देख लेंगे अबाउट सॉइल पोल्यूशन, एंड इट विल गिव यू अ क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। सो लेट्स वॉच द वीडियो। What do you think is the basic source of food on this planet Earth? I'm sure you said plants. Some of us do eat animals, but these animals too depend on plants. So, what is it that plants cannot grow without? We know that sunlight is important for the survival of plants. Water? Yes, water is important too, but are we forgetting the most important thing? Yes, it's soil. Soil provides the basic nutrients and physical support to plants. Without soil, plants cannot survive. Soil then seems to be a very important resource, and no doubt it is. What else do you think does the soil contain? It contains a variety of minerals, microorganisms, and several other dead and decaying matter. But have you ever wondered where soil came from? How was it formed? Let us see what Sam has observed about a small rock in his backyard. Sam observed a rock about the size of his fist in his garden. In a year's time, this rock disappeared, and now in its place, he found a tiny mound of soil. What do you think happened to the rock? Let us see what all changes the rock underwent in the past few months. The rock must have undergone physical, biological, and chemical processes.
What do I mean by these very terms? First, let us see the ways in which this rock was broken into pieces. The sun shone brightly on the rock. This caused the rock particles to expand, and after sunset, they contracted. This process kept happening over and over again. Do you know what happens when a substance undergoes constant expansion and contraction? Cracks will be formed. Yes, cracks are formed in the rocks. Now, cracks may not be a good sign. It means that the rock is on its way towards disintegration. Along came the rains, and at times water got accumulated in these cracks when the garden was watered. When it was winter and the temperature touched the freezing point, this water froze. What happens when water freezes? It turns into ice. And think about this. Does ice occupy the same space as water? Ice, in fact, takes up more space than water. It's because its molecules expand and take up space. Now, what would happen if this expansion of water happens in the cracks of the rocks? These expanded water molecules will exert a pressure on the rocks and causes them to break into parts. But this kind of breaking does not change the chemical composition of the rocks. The rocks are just physically damaged and there aren't any chemical changes taking place. What I mean to say is that the chemical components of the rock remain the same, but its physical parts undergo a change. We call such kind of weathering as physical weathering of rocks. That's what had happened to the rock Sam saw outside his garden. The rock pieces will break into tinier pieces, which we then call soil. What do you think happens in chemical weathering of rocks? Do you know what has changed in the appearance of the Taj Mahal, which is one of the seven wonders of the world? This monument, which is made up of white marble, has now turned yellowish in color. Can you figure out what may be the reason for such a change? The pollution levels in the city have risen to such an extent that the rains bring down the sulfur pollutants with them. These and several other pollutants make the rain acidic. What can be the effect of acid rain? Acid rain reacts with the rock and this leads to some chemical reactions. In the case of the Taj Mahal, these reactions have led to a color change of the marble. We call this as chemical weathering of rocks. Which is the last type of weathering? Biological weathering. What do you think happens in this type of weathering of rocks? Let us look at what biological means. It means relating to living organisms. Now, what connection could living organisms have with the weathering of rocks? Have you ever seen a rock covered with moss? Or plants which have grown in between the cracks of rocks? At times, you will also observe lichens growing on the surface of rocks. These are living organisms, and when they grow on the rocks, they weaken by the chemicals they produce. Even the roots find their way into the cracks of rocks and cause them to further widen and break. As the living organisms act as agents of weathering, we call this type of weathering as biological weathering of rocks. All these affect the rock and break it down into tinier pieces. Do you know what these tiny pieces are called? Soil, that's right. We will look at how this valuable resource gets polluted in today's world. So we have learned a lot about this soil or soil component and also what exactly happening here. Next we will discuss about the soil pollution. We have already discussed the thing, but now we will learn or see how this is exactly happening. Okay. So let's start with our last video of soil pollution and also wrap up the topic of soil pollution. Let's watch it carefully. Do you think soil can be easily produced? You may argue that we have so many rocks, we can surely make lots of soil. But this is not as easy as it seems. Do you know that it takes more than 500 years to produce an inch of the topsoil? You heard me right. It takes 500 years. Now you will think twice before assuming that we have enough soil to last our lifetime. So it is important to note that soil too is a very valuable resource. The soil we have on this planet is limited and cannot be easily reproduced. But we humans are constantly ignoring this fact and are polluting the soil.
How do humans actually pollute soil? Let us look at the occupation of agriculture. Farmers use large amount of fertilizers and pesticides that harm the soil. Soil contains innumerable microorganisms which are very useful for recycling nutrients in the soil. What do I mean when I say recycle? When organisms die, the dead organic matter needs to be broken down into simpler nutrients. How is it broken down? The microorganisms act upon this matter and the nutrients then find their way into the soil. Now imagine if these microorganisms are absent, the soil will become infertile. And that's exactly what these harmful chemicals are doing to the soil. They are killing the microorganisms of the soil. They also kill the earthworms which make humus. What is humus? Have you heard people say higher humus content makes the soil fertile? Yes, humus is the remains of the dead matter of plants and animals, and earthworms help create this humus by working on this organic matter. Why is this humus so important? Did you know that the top layer of the soil contains humus and therefore it's the most fertile layer? Yes, and along with the humus, it contains living organisms and several other nutrients. Humus does make the soil fertile. It also helps absorb water and allows air to penetrate right into the ground. So now you know why humus is a very important soil component. Other factors such as soil erosion also makes the soil infertile. What do I mean by the word erosion? You know that water and wind are powerful when they are in motion. This powerful action causes the topsoil layer to be carried away. As I told you already, the topsoil is the most fertile part of soil. What is a soil without its top layer called? Infertile soil, that's right. The soil becomes infertile due to erosion. Do you know cutting trees also contributes towards erosion? Yes, but do you know which part of the tree prevents soil erosion? The roots, that's right. The roots of the trees hold the soil together and prevent it from being carried away. So what are we waiting for? You too can prevent soil erosion by planting a tree. We have learned so far that soil can be polluted by addition of harmful chemicals and by removal of valuable nutrients. In our next video, we will look at biogeochemical processes of the environment. A fancy term, isn't it? Do watch our next video to learn more about it. So this is all about our soil pollution. We have already learned about it, and next we will learn about light and noise pollution. But before that, let's discuss exactly what's happening here. So types of pollution based on causes. जो घट रहा है वो घटने के लिए जो रीजन है, जो कॉजेज है, उसके बेसिस में हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इस पॉल्यूशन को. फर्स्ट क्या है? लाइट पोल्यूशन. सेकेंड वन इज नॉइज पोल्यूशन. लाइट पोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? लाइट पोल्यूशन क्या होता है? अगर लाइट वर्ड आ जाए दैट मीन्स दैट रिलेटेड टू लाइट. सो व्हाट्स हैपनिंग इन लाइट पोल्यूशन? आप एक चीज सोचो, आपके आसपास आप सोचो रात को रोड से जा रहे हो और एक लाइट है, एक वो होता है ना रोड की साइड में लगा हुआ होता है लैम्प, लाइक लैम्प स्टैंड और मे बी इन ए लाइट पोस्ट और समथिंग. तो वहां पे एक लाइट लगा हुआ होता है जिससे इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके आंखों में कि आप सामने वाला जो चीज लाइक रोड है वो देख ही नहीं पाते हो. और समटाइम्स आपके ऑपोजिट से सोचो कोई कार आ रहा है और उसका जो लाइट है वो इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी आंखों में कि आप देख ही नहीं सकते हो. सो दिस काइंड ऑफ थिंग अगर हैपन ना कहीं पे भी तो क्या होता है, इस वजह से भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइट पोल्यूशन. जो अमाउंट होना चाहिए, जो दिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, रात को अगर दिखना है हम लोगों को अंधेरा में तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट विल बी इनफ. बट अगर उससे बहुत ज्यादा है और जो हम लोगों की यूजुअल जो काम है, जो चीज है, जो घट रहा है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, दैट वी कैन कॉल लाइक लाइट पोल्यूशन. जैसे कि अगर आप सोचो कि ये एक लाइट पोस्ट है, इस लाइट पोस्ट के ऊपर एक बल्ब है और इससे लाइट ऐसे पूरे जगह पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है
और ये एक लाइट पोस्ट है और इस लाइट पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा मैट फिनिश वाला व्हाइटिश कवरिंग लगा हुआ है, जो आजकल आप मेट्रो में भी देख सकते हो कि एक जो नया मेट्रो का मॉडल है वहां पे भी आप देख सकते हो कि जो लाइट होता है ना वो जितना देखने के लिए सफिशियंट है उतना ही देता है, क्योंकि उसके ऊपर एक व्हाइटिश मैट फिनिश का कवरिंग लगा हुआ होता है सो दैट लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, मैं कंपार्टमेंट के अंदर का बात कर रही हूँ। तो ये जो है इसके लिए लाइट तो बाहर आ रहा है, बट इसका जो ये जो रिफ्लेक्शन जो कैपेसिटी है, जो ज्यादा आंखों में लगने वाला जो चीज है वो इससे नहीं आ रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ डूइंग लाइट पोल्यूशन, बट दिस इज नॉट। सो what we can say, light pollution is a condition where there is an excessive disturbing light. लाइट है बट वो डिस्टर्बिंग है, जो हार्म कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन इज समथिंग, सोचो कोई भी आवाज ज्यादा है, जैसे कि बताते हैं कि स्कूल के सामने, हॉस्पिटल के सामने यहाँ पे हॉर्न मत बजाओ, बट कई कई लोग होते हैं कि हॉर्न बजाते बजाते जाते हैं, और साथ में सोचो कोई जगह पे जैम है तो बहुत सारे लोग हॉर्न बजा रहे हैं, पता है उन लोगों को कि सामने वाला कार हिल नहीं सकता, फिर भी वो बजा रहा है। तो देयर इज काइंड ऑफ नॉइस पोल्यूशन। बट अनदर थिंग यू कैन थिंक अबाउट, कोई ओकेशन चल रहा है और कहीं पे माइक लगा हुआ है, उस माइक का जो साउंड है वो यूजुअल जो सुनने का जो एक्चुअल अकॉर्डिंग टू रूल जो डेसिबल में होना चाहिए उससे ज्यादा डेसिबल में है, मतलब वो हम लोग के कानों में आके लग रहा है। तो ऐसा है, तो दिस इज काइंड ऑफ नॉइस पोल्यूशन। देखो, नॉइस पोल्यूशन इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ डिस्टर्बिंग साउंड नॉइस। कोई बहुत मतलब बहुत हेवी एक आवाज आता है जो ऐसे एकदम दिमाग मतलब सर पर एकदम लगता है कि यार हेडेक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। Okay, there is a video about it, noise and noise pollution, but we will watch it later. First, we will learn about the causes of pollution. ठीक है, उसके बाद हम लोग वीडियो देख लेंगे। Causes of pollution क्या क्या हो सकता है? Human activities most important है, and this is one of the most important and vital reason है। क्यों? People can create pollution by throwing away too much trash, using car that produces a lot of smoke, और by using harmful chemical। harmful chemical से soil और water pollute हो सकता है, smoke से क्या हो सकता है, air pollution हो सकता है, और यहाँ पे क्या है, throwing away trash से soil pollution हो सकता है। next क्या है, अच्छा यहाँ पे एक ट्रैश फेंकने का फोटो भी था आप लोगों के लिए एज अ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखो, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, some factories release chemicals into the air and water as a part of their processes। मतलब जो चीज बना रहा है उस फैक्ट्री में, जो चीज बन रहा है उसके मतलब एज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस वहां पे क्या कर रहा है, वाटर। देखो यहाँ पे फैक्ट्री से यहाँ की वाटर ऑलरेडी पोल्यूटेड हो चुका है, और साथ में ये जो स्मोक रिलीज हो रहा है इससे एयर भी पोल्यूटेड हो रहा है। सो दिस कैन कॉज पोल्यूशन। ठीक है, ये पोल्यूशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, बट बिफोर दैट वी विल वॉच द वीडियो फर्स्ट अबाउट द नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग इफेक्ट पढ़ लेंगे। लेट्स वॉच द वीडियो। Some sounds are very pleasant to hear. For instance, sounds from musical instruments like the flute, harmonium, violin, etc. What are the sounds in our day-to-day life that we don't like? The sound of vehicles honking on the road, bursting of firecrackers, sound from the loudspeakers during processions, and so on are some of the sounds